Uh, Participants are there? Yes, 112 Yes, sir. participants, right? Yes, Okay. sir. Participants are there. Sir, मुझे script It is my pleasure to be a part of this webinar on the topic getting started with Angular. Yeah. First of all, congratulate to all the participants and the organizing team to conduct such type of seminars and webinars. Yeah, I want to also appreciate the SOC IPS Academy for spreading and sharing knowledge during this period of pandemic. On this topic, yeah, definitely it is a new one. Uh, but I want to add something from my side that this is a time of technology only. So this pandemic of COVID-19 give us lots of opportunity in the field of information technology. Therefore, I just want to say to all the participants that be ready with all safety and be prepared for this new era of technology. So be prepared and learn technologies so that you will be able to get the jobs and you will be able to uh, make up your careers in the technology field. Being a member of CSI family, I want to share with you that the mission of the Computer Society of India is to facilitate research, knowledge sharing, learning and caring enhancement in all category of IT professionals, while simultaneously inspiring and nurturing new entrant into the industry and helping them to integrate with the IT community. In simple word, I can say that being a part of CSI family, you will be always aware about the new initiation and new opportunities coming in the field of technology. So just go through the CSI website, you will get all the information, how you can join and what are the benefits you will get when you become a member of this society. I wish good luck to all the participants and organizing committee for this webinar, that it will be a truthful event for all. On behalf of CSI, I thanks to SOC IPS Academy and management of IPS Academy for inviting me. Once again, good luck to all. Thank you and over to you. Thank you. Thank you, Nikita madam. Over to you. I'm not able to hear you. निकिता मैडम आप कर लें, आप म्यूट है आपका माइक्रोफोन. Okay, now am I audible? Yeah, okay. yeah. Sir, firstly I want to say sorry, Gupta sir, for the issues some was there. That's why I was not able to introduce yourself. Now I am giving the introduction to the participants. Our Chief guest, Dr. Professor Anil Gupta sir. He is an educationist with the qualities of a leader. His vision and result orientation have been the guiding force in making number of students a name to reckon with. Not only in India, but also globally, he has a rich experience of 23 years. He is a visiting professor of many renowned institutes like IIT Indore, DAVV IIPS Indore, DAVV IMS Indore, and many more. He has nominated for Bharat Jyoti Award in the year 2012 for this contribution to education for our society. He has association with professional bodies also, like he was Vice Chairman of CSI Indore Chapter from 2016 to 18, Secretary of CSI Indore Chapter from 2014 to 16, Managing Committee Member of CSI Indore Chapter from 2012 to 13, and ex-officio member of IEEE MP subsection from 2012 to 13. Professor Anil Gupta is a professor and head of MC department in Maharaja Ranjit Singh Group of Institutions Indore. Currently, he is working as a chairman of Computer Society of India Indore chapter. Thank you, sir, for your words. That will be very helpful for our students. Now, I would like to welcome our speaker, Mr. Mrinal Jain. Mr. Mrinal?
Yes, ma'am. Now the session is yours. You can start. Sure, sure. Thanks a lot, Anil sir, for such a lovely introduction, and Nikita ma'am, and everyone from the IPS Academy. I won't waste much time. We'll directly start with the session. Just let me know in the comments section if my voice is audible and it's clearly audible. If there are any issues, we'll quickly fix it and we'll start with the session. So yeah, it's audible, right? It's audible. Yes. Okay, great. So I'll share my screen now and we'll begin with the session. Okay, quick show of hands if my screen is visible. Yes, sir, visible. Okay, great. I won't be wasting much time and we'll be starting with the session. Just a few things to remember before starting the session. We are trusting you guys and we are allowing that if let's say, so whosoever is doing this annotation thing, I guess you should stop doing this. That's what I was trying to say. Excuse me, Nikita ma'am, if we can sort of directly move towards the same thing where we can stop everyone from doing all this stuff. I can see a lot of annotations on my screen. So if you can. We have to control this thing, or you said that you want proper interaction with the students, with the participants. Basically, Okay. what I'm able to say is that someone is trying to do this annotations on the screen, which are like not which I am unable to handle. Yeah. So I have to mute all the. I'm doing this. I'm doing this. No, won't be a problem. Just a second. Okay, yeah. So I'll share the screen again. I have stopped the attendee annotations. Okay, great. So that's what I was trying to say. If you are here to learn, please make sure you don't do such mischievous things. Two things. If you have any questions, you can either ask in the comment section or you can raise your hand. I'll be glad to sort of include you in the audio, and I'll ask you to ask your question. Cool. So great. Let's start with the webinar. First thing first, my question was that how many of you have already sort of worked on Angular previously, or if not Angular, how many of you have worked on HTML? If you can let me know in the comments section. Great, awesome. So, am I like? Is it fine if I'll be speaking in English throughout, or you want me to switch to Hindi or something like that? Okay, cool, great. Yeah. So let's start with the first slide. So yeah, I'll quickly take you through my introduction. Myself, Pranal Chen. I have been working as a front-end engineer for Witifeed from past 2 years. I'm also a Facebook developer circle lead for Central India. I'm a developer evangelist for companies like Mozilla and Microsoft. So basically, developer evangelist is a some sort of a person who is a tech speaker as well as a promoter of latest technology for that particular company. So I do that for Microsoft and Mozilla. I have been working as a Microsoft student partner for past 3 to 4 years for Microsoft as well. I'm a community manager for Free Code Camp, which is an international organization which teaches how to start coding for free. So they have video tutorials, audio tutorials, and hands-on tutorials. So that is there. I work for them as well. Also, I'm an international partner for
code.org, an organization which teaches small children's basic concepts of coding. So through this organization, we teach even students of like class 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th how to start with their coding and basic concepts of the coding. So yeah, that's pretty much about me, introduction. Okay, so yeah, now I'll quickly take you through the. Am I speaking too fast? Just let me know. We can take it slowly as well. For the students, you can just quickly give me all the feedbacks quickly, right? Whatever, जो भी आप लोगों को feel हो रहा है, you can quickly tell me. अगर कोई question भी होता है, कोई topic में skip कर देता हूँ जल्दी से, तो you can ask me to say it again. Great, because I'm having a look at the comment sections each and every time. Great. So आज का अपना जो agenda रहने वाला है, वो रहने वाला है how to start with Angular. तो जैसे कि मैंने chat section में आप लोगों से पूछा था, how many of you have already worked on HTML? A lot of you have worked on HTML, so it's really good. HTML की help से we can make a properly functional website, but in order to take that particular website live, एक live functional website बनाने के लिए HTML के साथ अपने को और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। HTML से अपन एक static website बना सकते हैं which would work on your system और properly काम कर जाएगा, but उसको live डालना है, आपको Google पे डालना है, server पे डालना है, cloud पे डालना है, तो you need a few different things as well. So that's where Angular comes in, right? So आज का अपना agenda रहेगा how to sort of set up basic Angular application. Basically, अगर एक Angular application का आपको development करना start करना है, तो how you can do that? What are the benefits which you get while working in Angular over HTML? HTML में जो benefits मिलते हैं, उससे ज़्यादा क्या अच्छे benefits मिल सकते हैं in an Angular application if you make an Angular application. Okay. Understanding the architecture, एक basic सा architecture, folder structure क्या होना चाहिए आपके application का, Angular basics, एक simple app बनाने के लिए आपको Angular के लिए Angular में क्या क्या जानने की ज़रूरत हो सकती है, that we'll be taking. Fourth point would be deployment. How you can, once you are done with the Angular application, you have made your Angular application, how you can deploy it on the web, right? That we'll be doing. Then there will be a small Q&A session if you guys have any questions, and last we'll have a small quiz where the winner would be getting a prize. So the questions in the quiz would be based on the PPT which I am sharing. Great. So yeah, let's start. So first, Angular introduction, right? So Angular is a front-end and client-side JavaScript framework. So this is the first point. Now, as I said, we'll be having interactions. So does anyone knows that what is a front-end framework or what is a client-side framework? There are two things which I have mentioned over here. So what is a front-end framework and what is a client-side framework? If you guys know, great. A lot of you know it. So I'll try to explain you. So every application, why I'm using the term application over here, why I'm not using the term website, because when you just say website, it is limited to your browser, okay? But when you say application, you sort of start thinking about your mobile. अपन लोग generally mobile में अपनी application use करते हैं, ठीक है? तो website is for browsers, application is for mobiles. तो सबसे बेस्ट जो एंगुलर का अपने को फीचर मिलता है, दैट इज वी गेट अ पैकेज ऑफ बोथ द थिंग्स. वी गेट टू मेक अ वेब एप्लीकेशन जो कि वेबसाइट पे भी चलती है और आपके फोन में इंस्टॉल भी हो जाती है. सो ये सबसे बेस्ट फीचर होता है एंगुलर का. नाउ व्हाट इज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंड व्हाट इज अ क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क. तो आप लोग जनरली बहुत सारी वेबसाइट्स विजिट करते होंगे, ठीक है? सारी वेबसाइट्स किसी न किसी कोड के बेसिस पे चलती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक. फेसबुक पे आप गए, आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है, एक यूज केस है, ठीक है? यू वांट टू चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर. आप प्रोफाइल पिक्चर वाले अपने फोटो वाले सेक्शन में जाओगे, उस पर हॉवर करोगे तो चेंज पिक्चर का आइकन आएगा, ठीक है? एज सुन एज यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर आइकन, व्हाट विल हैपन इज आपका एक कंप्यूटर में का ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें से यू कैन सिलेक्ट योर ऑन प्रोफाइल पिक्चर और उसको आप अपलोड बटन पे फिर क्लिक कर सकते हो. वंस यू क्लिक ऑन अपलोड बटन,
वो प्रोफाइल पिक्चर फेसबुक के सर्वर पे जाके अपलोड हो जाएगी एंड देन एवरीवन वुड बी एबल टू सी योर न्यू प्रोफाइल पिक्चर। तो ये पूरी यूज केस में 2 फ्रेमवर्क्स का यूज आता है। पहला जर्नी जो रहता है, आपने प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने पे क्लिक किया, आपने अपना नया फोटो सिलेक्ट किया, ये जितनी भी फंक्शनलिटी है दिस इज हैंडल्ड बाय फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आपके ब्राउजर के अंदर ही काम करता है, इसलिए उसको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जर्नी जो होती है वो होती है क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क की। वो कब स्टार्ट होती है? जब आप अपलोड बटन पे क्लिक करते हो तो वो फोटो फेसबुक के सर्वर पे अपलोड होता है एंड देन फ्रॉम देयर इट सर्कुलेट्स टू एवरीवन एंड एवरीवन इज एबल टू सी। तो ये जो सेकंड वाली जर्नी होती है जहां से फोटो अपलोड होता है दैट इज क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क, क्योंकि ये क्लाइंट के साइड में आपकी फोटो अपलोड हो रही है एंड देन द क्लाइंट इज हैंडलिंग, क्लाइंट इज फेसबुक ओवर हियर, क्लाइंट इज हैंडलिंग इट। तो ऐसे हर एक वेबसाइट में, हर एक एप्लीकेशन में 2 तरीके के फ्रेमवर्क यूज में आते हैं। आप कोई सी भी एप्लीकेशन का एग्जांपल ले लो, किसी भी एप्लीकेशन का एग्जांपल, यू आर यूजिंग, लेट्स से यू आर यूजिंग ट्विटर। अब ट्विटर पे भी आपका जो जनरली आप इंस्टाग्राम यूज करते हो अगर मान लो, तो आपने इंस्टाग्राम पे फोटो को अगर लाइक किया, किसी की फोटो को स्क्रॉल कर रहे हो, आप फीड में जा रहे हो, तो जनरली जो नॉर्मली जो फंक्शनलिटी होती है, आप फोटो को जूम कर लेते हो, जूम इन जूम आउट कर लेते हो, दिस इज फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का काम है। पर अगर आप कोई सा नया फोटो अपलोड कर रहे हो, किसी के फोटो को लाइक कर रहे हो, उसके लाइक का काउंट्स बढ़ रहा है, तो दैट इज टू बी हैंडल्ड बाय क्लाइंट। ठीक है, तो दीज आर, तो बेसिकली ये दोनों फीचर्स अपने को एंगुलर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है, अपने को अलग अलग लैंग्वेजेस नहीं यूज करनी पड़ती इसके लिए। ठीक है, second point is that Angular was created by Google, correct? Angular was invented by engineers at Google because again HTML was very simple and it was not solving the problems which users were getting. Websites बहुत heavy हो सकती थी उसके कारण, इसलिए this framework was made. Great. If you guys have any question, you can definitely just ask in the comment section. Great. Now, third point is that this particular technology, which is Angular, is used to make single page applications. Now, single page application must be a new terminology for a lot of you guys, correct? So I'll try to explain. Let's take an example of any particular website. Just let me know if my screen is visible to you all. My screen is still visible, right? Yes, it's visible, Mr. Ninal, it's visible. Video. So I'm taking an example of 2 websites. One is Twitter, okay, and second is the IPS Academy's website. Okay, so everyone should have a look at the top section near home icon. There's a refresh icon, correct? मुझे तो मेरे ही नहीं दिख रहा है, So, इसका तो इसका सेटिंग इतना अलग हो रहा है कि अब मुझे तो अपना ही नहीं दिख रहा। Okay, is everyone able to see the website which I have opened, IPS Academy? So everyone just have a look at the section where the refresh icon is there. Okay, so now what I'll do is I'll try to browse in different sections and you will see that the refresh icon will change every time. So if I'll go to another page, there would be a cross icon and then again the complete page would be loaded. सारे पेज लोड, सारे आइकन, सारे टेक्स्ट वेक्स सब लोड होगा, फिर वो आइकन वापस से क्रॉस वाला जो है वो हटके रिफ्रेश वाले पे आ जाएगा। मैं कहीं पे भी जाऊंगा, किसी भी पेज पे जाता हूँ, ठीक है, मैं गया रिजल्ट्स वाले सेक्शन पे, अगेन द सेम थिंग हैपेंड, वहाँ पे वो क्रॉस वाला आइकन आया और वो वापस से फिर जब सारा डेटा लोड हो गया अगेन रिफ्रेश वाला आइकन आया। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्विटर। ठीक है, मैं ट्विटर पे विजिट कर रहा हूँ। अब ट्विटर पे भी सेम चीज नोटिस करना आप लोगों ने, रिफ्रेश वाले आइकन को, मैं किसी भी सेक्शन में जा रहा हूँ, मैं किसी भी सेक्शन में जा रहा हूँ, वो रिफ्रेश वाला आइकन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वो रिफ्रेश वाला आइकन कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। मैं किसी भी यूआरएल पे जा रहा हूँ, किसी भी टैब पे जा रहा हूँ, वो रिफ्रेश वाला आइकन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दीज 2 थिंग्स एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द सिंगल पेज एप्लीकेशन टू यू गाइस। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है? इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ, it reduces the basically it reduces the number of assets loaded on your page every time. ठीक है,
आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आईपीएस एकेडमी की जो वेबसाइट थी उसका हेडर जो था वो कॉमन था, मैं किसी भी पेज पे जा रहा हूँ सेम हेडर था वो, है ना। पर हर पेज पे जाने पर वो हेडर वापस से लोड हो रहा था, उसके अंदर की इमेज सारी वापस से लोड हो रही थी, उसके अंदर का टेक्स्ट वेक्स्ट सारा वापस से लोड हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं थी। Whereas when we were visiting Twitter, जब मैं अलग अलग पेजेस पे विजिट कर रहा था तो वो आइकन रिफ्रेश वाला बार बार नहीं क्रॉस के अंदर आ रहा था। मतलब क्या था कि जो जो एलिमेंट्स चेंज होने चाहिए थे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे सिर्फ वही चेंज हो रहे थे। अगर हेडर थ्रू आउट वेबसाइट पे कॉमन था तो वो वैसा का वैसे ही रहता, वो हर बार रिफ्रेश पे चेंज नहीं हो रहा था। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड अ नॉन सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन से आपका वेबसाइट का डेटा कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है, आपकी वेबसाइट बहुत कम डेटा कंज्यूम करती है, क्योंकि वो जो मल्टीपल वेबसाइट्स पे आप जाकर देख सकते हो, जितनी भी वेबसाइट है, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, आप कहीं पे भी जाकर विजिट करोगे तो आप ये बेसिक डिफरेंस देख सकते हो कि जो ऊपर वाला रिफ्रेश वाला आइकन है, इट वोंट चेंज एवरी टाइम बिकॉज वो असेट्स को कैशे में रख के रखता है। इसका मैं एग्जांपल आपको भी फ्यूचर में और एक बार दूं, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट इट इज कंप्लीटली रिटन इन टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट क्या है? टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आप सब लोगों ने सुन के रखा होगा, राइट? यू माइट हैव हर्ड जावास्क्रिप्ट अ लॉट, इवन इफ यू आर मेकिंग अ HTML website, you might have heard about JavaScript, that this is how JavaScript is used and everything. But JavaScript was invented after TypeScript. First, TypeScript was invented, and through TypeScript, JavaScript came. So basically, you might have learned different languages as well. C, C++ सीखी होगी, COBOL सीखी होगी, and उसके बाद Java, and there must be many different languages which you might be learning. For example, Python है तो Python के साथ Django है. There is HTML, and then there is CSS. CSS में भी there are multiple types of CSS. There is SCSS, there is less, there is Sass. ठीक है? तो similarly JavaScript is originated from TypeScript. तो Angular में क्या होता है? TypeScript से चीजें लिखी हुई है तो वो automatically fast हो जाती है. For example, you might have listened or you might have heard this thing कि जितने भी गेम्स होते हैं, be it वाई सिटी और आप लोग जो भी गेम खेलते हो, पबजी जो भी सारे गेम खेलते हो, ऑल दिस गेम्स आर रिटन इन कोर सी लैंग्वेज। ये सारे गेम्स सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं। क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि जो ओरिजिन लैंग्वेज होती है ना, जैसे सी लैंग्वेज हो गई, ये जितनी भी ओरिजिनिंग लैंग्वेजेस है, इसमें कोड बहुत ज्यादा फास्ट चलता है। इसमें अगर आप कोड लिखोगे बहुत ज्यादा फास्ट चलता है। Why in today's days we write in all this JavaScript and Python? Because it is more human readable. अपन जो JavaScript, Python और ये सारी C# लैंग्वेजेस यूज करते हैं, ये ह्यूमन रीडेबल है, इसलिए अपन अपने फायदे के लिए इन लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। पर एक्चुअल में जो C, C++ वाली लैंग्वेजेस है, दे आर मच मोर फास्टर। उसमें अगर कोड लिखेंगे तो ज्यादा फास्ट चलेगा। सिमिलरली एंगुलर जो है वो टाइपस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो टाइपस्क्रिप्ट में लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो बहुत फास्ट चलता है। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन कि अपन एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं एंगुलर के थ्रू, एंड इट इज रिटन इन टाइपस्क्रिप्ट, देयरफॉर इट इज much more faster. Cool. So now, as I have already sort of introduced you what is TypeScript, तो एक इसका एक much bigger overview मैं आपको दे देता हूँ कि एक super set of JavaScript है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो कि TypeScript is the complete scripting language. उसी का एक सब पार्ट है JavaScript, जो कि अपन लोग यूज करते हैं जनरली अपनी वेबसाइट्स पे DOM इंटरेक्शन और एवरीथिंग के लिए, ठीक। TypeScript was created by Microsoft again when they initially started their Edge browser. Edge browser was written in TypeScript, ठीक है। It uses OOPS concepts. OOPS concepts you all must have heard a lot, and it's similar to different server-side languages, which is like C# and Java, which is common these days. So TypeScript is similar to them. Now, Angular. So Angular, as I said, that Angular is an add-on to the HTML thing, right? HTML से अपन लोग basic websites बना सकते थे, Angular एक add-on है उस particular technology के ऊपर। तो Angular के versions, basically Angular was launched by Google in 2009. 2009 में when they launched, they named this particular thing AngularJS. 2016 में, after a 5-year long gap, they launched the second version of Angular,
which was Angular 2. Angular 3 was never launched. In 2017, they launched Angular 4. And similarly, in 2020 June, the 10th version of Angular was launched, which is Angular 10. Okay, so basically it's an open source library. It's an open source framework where you get an update every 6 months. You as a developer also can contribute to the Angular's library. If you feel like that I want to add this feature, this particular thing to Angular's code, so you can suggest the developers, and they can, if they like it, they will add your code as well. So this is the version history of Angular, right? So in previous slide, I clearly mentioned that the very first Angular version was called Angular JS, and after that every version was just called Angular. So initially it was launched as Angular JS, and after that every year it is known as Angular 2, Angular 3, Angular 4, Angular 5. So they omitted the name JS from second version. So that is a thing to remember. Now we'll talk about benefits of Angular. Okay, like what basically if you are learning any technology, आप लोग कोई सी नई technology use कर रहे हो, तो you should be knowing that why is this important, मुझे इससे क्या फायदा मिलेगा, ठीक है? So let's have a look at the benefits of Angular. So very first benefit is that it provides functionality out of the box. Basically अगर आप कोई सा भी वेबसाइट बना रहे हो HTML से, ठीक है, तो आपको इनिशियली कितना टाइम लगता है उस फोल्डर को सेटअप करने में. आपको एक फोल्डर बनाना पड़ता है, CSS फाइल बनाई, जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई, फिर उसमें हेडर वेडर इंक्लूड किया, एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड, ठीक है. प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने में उसको बहुत टाइम लगता है. एंगुलर क्या प्रोवाइड करता है? सिर्फ एक पर्टिकुलर कमांड से. द कमांड इज ng create, ठीक है. ng इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंगुलर, जो कि आप कमांड लाइन में यूज करते हो. ng would be used everywhere in the command line. तो एक छोटी सी कमांड ng create and name of your project, you just need to write this and press enter. Angular will automatically create a complete folder structure for you with that particular command. तो बहुत छोटी छोटी कमांड से you can directly start. Basically it would give you a proper website with just one command. आपको एक, और फिर उसके अंदर आप अपने HTML CSS थोड़ा बहुत edit करके you are ready to go live. You can just do it with one particular command. So that is the very important thing which is provided by Angular. Second is TypeScript, which I have already mentioned कि TypeScript बहुत fast होती है, क्योंकि एक ये superset है language का, जैसे कि C++ इतने fast चलते हैं, तो वो एक इसका benefit है. Third thing is consistency. So Angular is very consistent. मतलब अगर आप generally आप देखेंगे कोई सी वेबसाइट, आप अपन अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं और अपन जब बहुत सारे मल्टीपल ब्राउजर्स यूज करते थे, फॉर एग्जांपल a lot of you must be using Google Chrome, a lot of you must be using Firefox और Internet Explorer, और ऐसे अलग अलग ब्राउजर्स आप लोग यूज करते होंगे, ठीक है. कोई सी वेबसाइट का बाय डिफॉल्ट ऐसा रहता होगा कि यार ये तो क्रोम पे ही सही चलेगी, बाकी ब्राउजर्स पे नहीं चलती है सही. You must have faced this issue, right? If anyone has faced this issue, you can let me know in the comment section, ठीक है. तो ये जो कंसिस्टेंसी का इशू आता है वेबसाइट्स का, ठीक है, तो ये एंगुलर ऑटोमेटिकली हैंडल करता है. एंगुलर आपकी वेबसाइट को सारे मल्टीपल चैनल्स पे प्रॉपरली रन करता है, एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. वो एंगुलर का ही बैकएंड इंजन उस चीज को हैंडल करता है. तो ये कंसिस्टेंसी मिलती है अपने को एंगुलर में, ठीक है. बाय डिफॉल्ट इफ यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज. अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ क्रोम पे चल रही थी, तो जितने यूजर्स फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउजर ये यूज कर रहे थे, वो लोग आपकी वेबसाइट को यूज ही नहीं करेंगे, करेक्ट. तो प्रोडक्टिविटी आपकी वेबसाइट की ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. मेंटेनेंस इज वेरी इजी, मतलब आप बहुत सारी चीजें इजीली, आपको अगर मान लो जैसे कि मैंने आपको बताया था इनिशियली सिंगल पेज एप्लीकेशन का एग्जांपल, कि जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कितना कोड चेंज करना होता है, जो कि चेंज हो रहा है आपके डिफरेंट पेजेस पे. अगर आपका हेडर फॉर एग्जांपल पूरी वेबसाइट में आपका सेम है, तो आपको हर पेज पे वापस से हेडर नहीं लगाना पड़ेगा. अगर अपन मान लो मैं एक मेरी वेबसाइट बना रहा हूँ, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, जिसके अंदर 4 टैब्स है. एक है अबाउट मी, दूसरा है कॉन्टेक्ट सेक्शन, तीसरा है रेज्यूमे सेक्शन, ठीक है. अब तीनों सेक्शन में हेडर तो मैं सेम रखूंगा, है ना, पर मेरा नीचे वाला जो कंटेंट है, बॉडी वाला कंटेंट, वो चेंज होगा, करेक्ट. अब मैं 3 पेजेस बनाऊंगा अगर मैं नॉर्मल HTML वेबसाइट बना रहा हूँ,
और मुझे तीनों पेजेस में वो हेडर का कोड पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे फ्यूचर में चौथा सेक्शन ऐड करना है मेरी वेबसाइट पे, विच इज समथिंग रिलेटेड टू गैलरी सेक्शन ऐड करना है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज मुझे चारों फाइल्स में जाके चारों फाइल्स के हेडर में वो नया वाला गैलरी सेक्शन ऐड करना पड़ेगा, तब वो मेरा वेब काम हो पाएगा। एंगुलर में क्या होता है, आपका कोड मॉड्यूल्स में कन्वर्टेड रहता है, तो इजीली मेंटेनेबल रहता है। आपका हेडर सेक्शन एक ही जगह रहेगा कोड उसका, और वो अलग अलग टाइप से आप इंक्लूड कर सकते हो। आपने एक मॉड्यूल बना दिया हेडर का, अब आपको वो कॉन्टेक्स्ट वाले सेक्शन पे ऐड करना है तो आप उसको वहाँ ऐड कर सकते हो, वहाँ कॉल कर सकते हो। आपको होम पेज पे ऐड करना है, वहाँ कॉल कर लिया। आपको गैलरी सेक्शन में ऐड करना है, वहाँ कॉल कर लिया। तो ये इजीली मेंटेनेबल हो जाता है। फ्यूचर में अगर चेंज करना है तो आपको होम पेज कॉन्टेक्ट पेज पे नहीं चेंज करना पड़ेगा। जो आपने होम का मॉड्यूल बनाया था वहाँ पे जाके एक बार चेंज कर दोगे, ऑटोमेटिकली सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये मेंटेनेंस ईजी हो जाता है उसमें, ठीक है। एंड मॉड्यूलर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, एज आई सेड कि आपका एक एक अलग अलग सेक्शंस का मॉड्यूल बन जाता है। हेडर का अलग मॉड्यूल बन गया, फुटर का अलग मॉड्यूल बन गया, जहां जहां कॉल करना है वहां आप इजीली कॉल कर सकते हो उसको, ठीक है। द लास्ट थिंग इज एंगुलर मटेरियल। एंगुलर प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड स्टाइल फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा CSS नहीं लिखनी पड़ती आपका वेबसाइट को अच्छा दिखाने के लिए। एंगुलर ऑलरेडी बहुत सारे प्री डिफाइंड स्टाइल्स प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करके आप इजीली आप वेबसाइट बना सकते हो। तो अगर आपको डिजाइन का भी इतना नॉलेज नहीं है तो एंगुलर प्रोवाइड्स थीम्स विच यू कैन यूज फॉर योर वेबसाइट। मतलब बेसिकली अगर एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है आपको, जिसमें आप आपका थोड़ा बहुत डिटेल्स दे रहे हो, रेज्यूमे दे रहे हो, तो आप एंगुलर मटेरियल की थीम्स यूज करके आप बना सकते हो। जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप एंड क्लिक ऑन फ्यू थिंग्स एंड यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर थीम। तो ये बहुत अच्छा फायदा है एंगुलर का। एंड द लास्ट थिंग इज इट वर्क्स एज अ PWA, ठीक है। नाउ PWA का फुल फॉर्म पता है किसी को? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, यू गाइस नो इट। तो PWA is basically yeah, I'll wait for like 10 seconds if anyone can answer that what is PWA. Okay, so I'll tell you. So PWA is basically progressive web app, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इनिशियली बताया था वेबिनार के स्टार्टिंग में, एंगुलर अपनी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है? वेबसाइट और एप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम। दैट वेबसाइट इज लिमिटेड टू लेट्स से website is limited to browsers and application is limited to your mobile phones. Angular इन दोनों का एक joint version देता है अपने को, which is progressive web apps. मतलब आप इसको आपके ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हो। इसके थ्रू जो आप कोड लिखोगे वो आप अपने ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हो एज अ वेबसाइट। ऑल्सो यू कैन इंस्टॉल इट ऑन योर मोबाइल फोन एज अ एप्लीकेशन। यू कैन डू बोथ द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल कितना ईजी हो जाएगा ना, आपको एक ही चीज बनानी है, वेबसाइट बना रहे हो, वो एज अ एप्लीकेशन भी काम कर रही है, एज अ वेबसाइट भी काम कर रही है, राइट? करेक्ट। देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्रेसिव वेब एप्स अवेलेबल। फ्लिपकार्ट है, ओला प्रोवाइड्स इट, जोमेटो प्रोवाइड्स इट, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, एन नंबर ऑफ कंपनीज व्हिच प्रोवाइड this type of services. So it is really great, and all this now you guys by default know that अगर Flipkart और Amazon progressive web apps provide कर रहे हैं तो by default अब आपको पता चल गया कि वो Angular में बने हुए हैं, ठीक है। तो these are the benefits of Angular. Now setting up environment for an Angular application. So now we know that what are the benefits of Angular. So if we have to start working in Angular, how to set up in particular environment, ठीक है। HTML वेबसाइट बनाने के लिए तो बहुत सिंपल सी चीज थी, यू जस्ट नीड टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल, index.html लिखो और उसमें आप यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद इट, ठीक है। बट फॉर मेकिंग इन Angular एप्लीकेशन there are a few different steps which are needed. So very first step which you need is Node.js, ठीक है। तो Node.js is a basically Node.js is a platform which is again built on JavaScript for building fast and scalable network application, ठीक है। तो इनिशियली जब मैंने आपको क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में बताया था, तो जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आपका अपन ने एग्जांपल लिया था फेसबुक पे फोटो अपलोड करने वाला, तो जो इनिशियली वो फोटो सिलेक्ट करने वाला सेक्शन था वो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क मैनेज कर रहा था, और जो फोटो अपलोड हो रही थी सर्वर पे वो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क मैनेज कर रहा था। तो Node.js इज दैट पर्टिकुलर क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क जो आपके आप यहाँ से आपके लोकल मशीन से जो भी आप चीजें सर्विसेज रिक्वेस्ट कर रहे हो
वो क्लाइंट से लाके आपको वापस दे रहा है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर डाउनलोडिंग अ मूवी फ्रॉम समवेयर, इफ यू आर वाचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है, तो आपने क्लिक कर दिया उस यूट्यूब वीडियो के थंबनेल पे, पर अब उस यूट्यूब वीडियो का जो डेटा है जितना भी स्ट्रीमिंग वाला, वो सर्वर से आपके सिस्टम तक लाने का काम जो है वो क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क का रहता है, विच इज Node.js. And almost 60 to 70% of the websites and mobile application use Node.js as their client side framework. तो ये चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. एक बार आपका डेटा यहाँ पर आ जाता है, Node.js का काम खत्म, फिर आपके फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का काम स्टार्ट हो जाता है. उसको प्ले करना, उसको पॉज करना, ड्रैग करके आगे लेकर जाना वीडियो को, एंड एवरीथिंग दैट इज डन बाय फ्रंट एंड फ्रेमवर्क विच इज नॉर्मल जावास्क्रिप्ट. ठीक है, तो Node.js आपकी मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए. You can directly go to nodejs.org and you can install it on your machines. ठीक है, it's very simple. You can just download it and it would be installed. Basically, next, and that's all done. So first thing which is required is Node.js. Second, you need any code editor. Any code editor, basically you can use it. I personally would suggest VS Code. So if you guys are listening, and you can let me know in the comment section कि आप कोड लिखते हो, बीट C++, जावा कोई सा भी यूज करते हो, तो आप लोग कौन सा कोड एडिटर यूज करते हो. ठीक है, that's really great if you guys use VS Code. VS Code is the best now. मतलब उससे better अभी कुछ भी नहीं है. Like there's no other code editor which is even touching the functionality which VS Code would provide. So you need a code editor. So first thing was Node.js. Second, you need a code editor. Now, once you have Node.js in your machine, now you can start coding in Angular. Okay? Now you can start coding in Angular. So for starting Angular, for now, initially हमने क्या किया, सबसे पहले हमने Node.js इंस्टॉल किया जो कि हमको client side connections के लिए help करेगा. Now we need a front end framework as well. ठीक है, तो front end framework इंस्टॉल करने के लिए what we'll be doing is we'll be using the command npm install -g @angular/CLI. ठीक है, so I know this command would be sounding a bit rare to you, मतलब ये क्या क्या चीजें लिखी हुई है इसके अंदर, but I'll explain you side by side. तो npm is short form of node package manager. तो हम लोगों ने node इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी, तो हमको node package manager का एक्सेस मिल गया. ठीक है, सेकंड वर्ड इज इंस्टॉल. हम लोग कुछ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं. -g इज बेसिकली ग्लोबल और लोकल के लिए ये यूज में किया जाता है. -g इसलिए यूज कर रहे हैं अपन क्योंकि अपने को हमारे पूरे सिस्टम में ये पर्टिकुलर चीज इंस्टॉल करना है, इसलिए मैं -g लिख रहा हूँ. G is for global and @Angular CLI is that I want to install Angular in my particular machine. तो ये कमांड आप जैसे ही लिखोगे नोड इंस्टॉल करने के बाद Angular आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, so this was the third thing which was needed. So once Angular CLI is installed, इस तरीके का आपको कमांड लाइन में आपको UI दिखेगा. How many of you are familiar with command line interface? आप लोगों ने यूज किया हुआ है, नहीं किया हुआ है? अगर नहीं किया हुआ है तो I'll give you a quick demo. और अगर ऑलरेडी किया हुआ होगा तो we'll quickly shift to the next slide. ठीक है, तो once your Angular CLI is installed, इस तरीके का व्यू आपको दिखेगा. Great. So once your CLI is installed, it would look something like this. ठीक है. What I'll do is I'll quickly give you a demo of how Angular CLI works. तो मेरे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है Angular CLI. ठीक है, ठीक है. So let's say Angular CLI भी इंस्टॉल्ड है और नोड भी इंस्टॉल्ड है. ठीक है, तो अगर नोड इंस्टॉल्ड है या नहीं आपके मशीन में आपको चेक करना है, तो जस्ट नीड टू राइट नोड. कोई से भी कमांड लाइन इंटरफेस पे जा सकते हो आप. यू नीड टू राइट नोड एंड -v. ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इसमें नोड इंस्टॉल्ड है कि नहीं. आपको अगर चेक करना है कि आपके इसमें npm इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो जस्ट नीड टू राइट सिंपली npm -v. you will get to know that okay, you have Angular CLI as well. ठीक है, तो ऐसे ही you can start checking. अगर इंस्टॉल नहीं होता तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो. ठीक है, तो this is how you use basically command prompt. ठीक है, now basics of Angular. ठीक है, तो अब I'll
explain you once. So अभी तक अपन ने क्या कर लिया है, अपन ने Angular अपने मशीन में इंस्टॉल कर लिया है, ठीक. Now Angular application is a tree of Angular components and sections of UI can be broken up into the components. तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, we can take example of any website. I have taken example of this website which is meetup.com, ठीक है. तो जो मैंने जैसे पिछली स्लाइड में बोला था कि एंगुलर में अपन क्या कर सकते हैं, हर एक कंपोनेंट को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि आप ये रेड बॉर्डर्स जहाँ जहाँ देख रहे हो वो सारे सेक्शंस अपन को अलग अलग कंपोनेंट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं. जैसे हेडर हो गया, फिर एक ये जो लेट्स टॉक एंगुलर वाला है ये सेक्शन, ये अलग हो गया. कवर इमेज वाला सेक्शन अलग हो गया. आर यू गोइंग वाला सेक्शन अलग हो गया. शेयर वाला सेक्शन अलग हो गया, ठीक है. सो व्हाई वी कैन डिवाइड दिस सेक्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स इज क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे को ये शेयर वाली ये जो शेयर वाला यूआई है ये मुझे किसी और पेज पे भी काम में आ जाए, तो मुझे वापस से नहीं लिखना पड़ेगा, मैं ये कंपोनेंट यूज कर लूंगा वहाँ पे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं ये हेडर वाला सेक्शन कहीं और यूज करना चाहता हूँ, तो मैं वापस से ये कंपोनेंट वहीं के वहीं यूज कर लूंगा, तो ज्यादा फायदा हो जाएगा. इसलिए एंगुलर में वी कैन डिवाइड द एप्लीकेशन इन डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है. Now this is a demo code of a Angular component, how Angular component looks, ठीक है. तो इसको देखने के पहले what we will do is we will quickly see the code in the VS Code section, ठीक है. तो अभी तक मैंने तुमको सब लोगों को कहाँ तक का बताया था कि how we can install Angular in your machine. और इनिशियली मैंने क्या बोला था कि सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से यू कैन सेट अप द कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है. तो वो लाइन ऑफ कोड क्या रहती है, ये इज माय फॉन्ट साइज इज लाइक थोड़ा छोटा है क्या, शुड आई इंक्रीज द फॉन्ट साइज? श्योर, आई विल डू दैट. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दैट व्हाटएवर यू गाइस आर फीलिंग, जस्ट लेट मी नो. Okay, it must be visible now. Okay, so the command for starting Angular application is this: ng is for Angular, and then new, because you are making a new application, and name of your application. Let's say I am making a website for making my own portfolio, ठीक है. तो मैं उस वेबसाइट का नाम दे दूंगा portfolio, ठीक है. And then I'll press enter. ng new, name of my website. So just have a look that Angular is automatically creating all the required things for that particular website, ठीक है. वो सारा कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर, HTML फाइल, CSS फाइल, JavaScript फाइल, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है ऑटोमेटिकली Angular मैनेज करके वो अपने को एक प्रॉपर कोड बना करके दे देगा, ठीक है. So while this command is running, we'll quickly shift to the code section. एक बार वो command पूरी run हो जाएगी तो फिर मैं वापस से उस section पे आ जाऊँगा, ठीक है. तो once it command would be sort of in running position, I'll explain you this code on the UI, ठीक है. और ये UI route modules वाला भी उसी के अंदर आएगा, ठीक है. Till then we'll quickly shift to the topic how you can turn your Angular application into a PWA, ठीक है. तो PWA I guess सब लोगों को already clear होगा कि PWA की functionality होती क्या है, correct? Which I explained that it can be installed as a application as well. Also it can be used as a website. Now how you can turn any of the Angular application into PWA, मतलब code की help से, basic code की help से how you can turn it into a PWA. क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन पे काम किया होगा, स्पेसिफिकली मोबाइल एप्लीकेशन पे, इफ एनीवन हैज वर्कड जस्ट रेज योर हैंड और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो आपको पता होगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है मोबाइल एप्लीकेशन की. हमको आइकन्स डिफाइन करने होते हैं अलग अलग वर्जन्स के लिए. एक मैनिफेस्ट फाइल होती है बेसिकली जिसमें ऐप के सारे डिटेल्स होते हैं, उसकी स्प्लैश स्क्रीन का, ऐप का आइकन, ऐप का वर्जन एंड एवरीथिंग, ठीक है. ये वाली चीज अपने को ऐड करनी होती है उसमें. तो सिमिलरली अगर आपकी एक एंगुलर एप्लीकेशन है उसको आपको
इंस्टॉलेबल बनाना है कि वो फोन यूजर के फोन में इंस्टॉलेबल भी हो जाए, तो आपको एक manifest.json फाइल ऐड करनी होती है उस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। So that is what is required. Till then, what I'll do is I'll go to the code section and see if the code is running done. Okay. So as you can see here that now our application, the complete command जो भी सारी चीजें रन होनी थी वो already रन हो गई है, ठीक है। Now what we'll do is we'll go into the folder. अपनी एप्लीकेशन का नाम अपन ने क्या रखा था, portfolio नाम रखा था, ठीक है अपन ने। So what I'll do is now I'll try to open that particular folder, or we'll see that what are the contents of that particular folder, ठीक है। Portfolio was the name. I'll add it to the section. Now, see, let's have a look. So we just wrote one particular command, and we got all these folders created in our portfolio folder. हमने portfolio नाम दिया था वेबसाइट का, अपने को ये सारी चीज by default मिल गई है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर by default एंगुलर ने अपने को बना के दे दिया। इसके अंदर अगर मैं src फोल्डर में जाऊंगा और app फोल्डर के अंदर जाऊंगा, so you will see that there are HTML files, CSS files already made, predefined HTML CSS files अपने को मिली हुई है। ऑलरेडी एसेट्स का फोल्डर बना रखा है जिसके अंदर अपन अपने इमेजेस और आइकन्स ये सारी चीजें रख सकते हैं। फेव आइकन, index.html, बेसिक स्ट्रक्चर अपने को ऑलरेडी बना हुआ मिल चुका है एप्लीकेशन का, ठीक है ना। अगर ये नॉर्मल HTML वेबसाइट होती तो अपन इसको कैसे रन करते, वी वुड हैव जस्ट ओपनड index.html फाइल, जो अपनी index.html फाइल होती है उसको अपन ब्राउजर में ओपन कर लेते तो अपना वेबसाइट रन होने लग जाता है, करेक्ट। But for Angular, since everything is happening through command line, तो what we'll do is हम अपन लोग command line के थ्रू ही इस पर्टिकुलर चीज को रन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कमांड लाइन से अगर रन करना है किसी पर्टिकुलर एंगुलर एप्लीकेशन को, तो अगेन उसके लिए कमांड सेम होती है ng, which is for Angular, और serve is the command if you want to serve anything. तो अपन लोगों ने अभी तक दो कमांड्स देख ली एंगुलर की। फर्स्ट वन वाज ng न्यू, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए, सेकंड इज ng serve, अगर अपने को अपना कोड क्रोम में चलता हुआ देखना है तो उसके लिए, ठीक है। अगेन ng serve जो है, it will take some time to build the complete application and then serve it to the browser, ठीक है। So we'll have a look, अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो we'll shift to the PPT, otherwise we'll see how it works, ठीक है। So if you can see that it is building the application, मतलब जो जो चीज़ें अपन ने कोड में लिख के रखी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर वो बिल्ड करेगा, and then we'll be able to see the code running, ठीक है। जब तक ये बिल्ड रन हो रहा है, I'll quickly take you through the contents of index.html, ठीक है। अभी कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, I'll open the browser, उसके पहले मैं बता देता हूँ index.html। तो अगर किसी ने भी नॉर्मल HTML वेबसाइट पे काम किया होगा तो यू मस्ट बी सीइंग कि बहुत सारा कोड आपका index.html पे लिखा होता है जनरली, मतलब 80% ऑफ द कोड आप index.html पे लिखते हो, ठीक है। तो फिर वहां से सारी एडिटिंग और वहां से सारा रीडायरेक्शन और एवरीथिंग यू डू इट। बट एंगुलर में जैसे मैंने बताया था कि मॉड्यूल वाइज आपका कोड हो जाता है, मतलब यू कैन कन्वर्ट योर एंटायर वेबसाइट इनटू मॉड्यूल्स, हेडर अलग जगह रख दिया, फुटर अलग जगह रख दिया, जहां जरूरत है वहां कॉल कर लिया। तो उसी कारण से आपका जो index.html का कोड रहता है वो एकदम क्लीन हो जाता है, और सिर्फ आपको बॉडी में ये app.root वाला पार्ट रखना पड़ता है। ये रखने से एंगुलर ऑटोमेटिकली आपकी चीजें हैंडल करता है कि आपको क्या चीजें कहाँ रखना है, क्या चीजें कहाँ नहीं रखना है, ठीक है। अब जैसे ही अब मैं क्रोम ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ कि अपना कोड रन हुआ है कि नहीं, तो इफ यू कैन सी हियर इट इज रिटन दैट एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर इज रनिंग ऑन ब्राउजर लोकल होस्ट 4200, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये रन हो रहा है, ठीक है। तो नाउ विल गो टू आवर
ब्राउजर एंड सी कि इस लोकेशन पे अपना कोड रन हो रहा है कि नहीं। स्टैटिक कोड दे रखा है स्टार्ट करने के लिए कि ये वाली सारी चीजें अपने को एक बेसिक सा अपना कोड टेम्पलेट बेसिकली एक बॉयलर प्लेट अपने को दे दिया, इसके ऊपर अपन काम कर सकते हैं। ठीक है, लोकल 4200। अगर इसको अपने को चेक करना है कि हाँ यही वाला कोड है कि नहीं, तो व्हाट वी कैन डू इज, लेट्स से अपना HTML फाइल है, ठीक है, दिस वुड बी familiar to you everyone, ठीक है। तो what we will do is we'll try to change anything in the code और we'll see कि यहाँ पे change होता है कि नहीं, ठीक है। तो for example ये header में welcome लिखा हुआ है ना, तो let's try to change that particular message, ठीक है। यहाँ welcome की जगह what I have written is welcome to IPS, ठीक है। मैंने ये ट्राई करा लिखा, ठीक है। अभी मैंने सेव नहीं किया, ठीक है। अब नॉर्मल HTML वेबसाइट में अगर आप नोटिस करोगे कि आप कुछ भी HTML में चेंज करते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप यहाँ पे सेव करते हो, पहले यहाँ सेव कर दिया, फिर वापस से ब्राउजर में जाके ब्राउजर के टैब को रिफ्रेश करना पड़ता है। 2-3 बार रिफ्रेश करो जब जाके चेंजेस विजिबल होते हैं, ठीक है। बट एंगुलर में क्या फायदा होता है, यू डोंट नीड टू डू दैट। बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप कुछ कोड में चेंज करते हो, ऑटोमेटिकली ब्राउजर अपने आप को रिफ्रेश कर लेता है और वो चेंजेस दिखा देता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया। विल ट्राई टू चेंज फ्यू मोर थिंग्स, फॉर एग्जांपल ये रिसोर्सेज वाला टेक्स्ट है, ठीक है, इसी पेज पे कहीं पे होगा ये रिसोर्सेज लिखा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको चेंज करके रिसोर्सेज फॉर वेबिनार कर दिया, ठीक है। हैव अ लुक, मैं जैसे यहाँ सेव करूँगा ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक रिफ्रेश कमांड चलेगी, ये रिफ्रेश होगा और ये रिसोर्सेज फॉर वेबिनार चेंज हो जाएगा। सो हाँ, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लक्ष्मी नारायण दैट द कमांड्स वुड बी सेम फॉर लिनक्स यूजर। Yes, commands would be same for Linux users. Wherever you are using command line, सारे commands same होंगे, ठीक है। And I'll give you a quick cheat sheet of the commands as well, ठीक है। तो ये एक बेस्ट फायदा होता है एंगुलर का कि जैसे ही आप कोड में कुछ भी चेंजेस करते हो, अगर मैंने यहाँ पे इस चीज को कुछ भी टेक्स्ट में कुछ भी चेंज किया यहाँ पे और जैसे ही सेव करूँगा, ऑटोमेटिकली इधर रिफ्रेश होगा और वो चेंज आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो ये आपका डेवलपमेंट टाइम बहुत सेव कर लेता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया और ये फोल्डर स्ट्रक्चर एक बेसिक सा रहता है किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज विल अगेन, सो ये एक मैंने बेसिक सा आपको एग्जांपल बता दिया उस चीज का। नाउ लेट्स कम बैक टू, ये आपका बेसिक एक एंगुलर एप्लीकेशन हो गया। अब व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप मान लो आपकी पर्टिकुलर किसी वेबसाइट जो आपने HTML बना के रखी है, उसको भी अगर आपको एंगुलर में कन्वर्ट करना है, तो यू नो दी स्टेप्स, आपको एक नई एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी ng-new की हेल्प से, और फिर ये एप्स वाले फोल्डर में जाके आपको अपने HTML और CSS को कॉपी पेस्ट करना रहेगा और आपका जो स्टैटिक HTML वाला वेबसाइट रहेगा वो एंगुलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताई थी कि आप इसको PWA में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉलेबल भी हो जाएगी, है ना, फोन के अंदर भी इंस्टॉलेबल हो सकती है, ठीक है। तो उसको कैसे करना चाहिए, ठीक है, वो उसके लिए क्या स्टेप्स है, तो उसके लिए सिर्फ दीज आर दी स्टेप्स उसके लिए, ठीक है। सो पहली चीज क्या है, अगेन आपको एक एंगुलर की एक कमांड चलानी पड़ेगी, विच इज दिस पर्टिकुलर कमांड ng, ये वाली कमांड है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई एंड कन्वर्ट आवर ऑन एप्लीकेशन इनटू द एंगुलर एप्लीकेशन जो हम ऑलरेडी अभी बना चुके थे। I'll zoom in to the section again, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ, पोर्टफोलियो वाले में थे, तो ये कमांड पेस्ट करिए। व्हाट डज दिस कमांड से, ng add, ये आप लोग ऑलरेडी पहले से पता है, अपन एंगुलर PWA ऐड कर रहे हैं अपने कोड के अंदर, ठीक है। और फिर प्रोजेक्ट का नाम लिखना रहता है लास्ट में। अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या है, पोर्टफोलियो। ये कमांड लिखने से ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली PWA में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन यूजर व्हाइल ब्राउजिंग योर वेबसाइट, अगर वो किसी क्रोम में या फायरफॉक्स में ब्राउज कर रहा है, तो
वो पर्टिकुलर ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसको एक ऑप्शन देगा कि दिस इज एन PW एप्लीकेशन, इफ यू वांट टू इंस्टॉल इट इन योर मोबाइल फोन यू कैन डू दैट। तो जैसे ही यूजर इंस्टॉल कर लेगा तो वो एज ए एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगी, और बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी बेसिक जो फंक्शनलिटीज है, मान लो अगर आपका होम पेज है उसमें कुछ भी डायनामिक कंटेंट नहीं है, सिर्फ आपके बारे में डिटेल्स है, तो वो चीजें बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी वो यूजर यूज कर पाएगा, उसको चला पाएगा, उसको वेबसाइट बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज दी बेस्ट थिंग अबाउट इट। ठीक है, तो जैसे ये मैंने कमांड लिखी, बेसिकली ये कमांड से हो क्या रहा है, मैंने बोल तो दिया कि PW में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये कुछ आइकन्स जनरेट हो रहे हैं। तो इनिशियली जैसे ही मैंने पूछा था आपसे कि एंगुलर में मोबाइल एप्लीकेशन जब अपन बनाते हैं तो उसको कुछ आइकन्स की जरूरत होती है, ऐप आइकन की, लॉन्च आइकन की, ठीक है, तो एंगुलर वो सारी डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक कमांड लिखने से। ठीक है, ये वाली चीज होती है। इसको मैं अगर और क्लियरली एक्सप्लेन करूं तो सेम ये वाली चीज होती है। जैसे ये मेरी कमांड पूरी रन हो गई, अब आप अगर फोल्डर स्ट्रक्चर में आके देखोगे तो आपके फोल्डर स्ट्रक्चर में कुछ नई फाइल्स ऐड हो गई है, जैसे कि मैनिफेस्ट वाली फाइल। मैनिफेस्ट वाली फाइल के बारे में मैंने आपको इनिशियली बताया था कि किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में एक मैनिफेस्ट फाइल होती है जो कि उस पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन की डिटेल्स बताती है अपने को कि ये मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, इसमें आइकन्स कौन से यूज होने चाहिए, है ना, क्योंकि कहीं पे भी आप आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती है कि वो लॉन्च आइकन होगा कैसे दिखेगा, आप जब उसको मिनिमाइज करोगे तो कैसा आइकन दिखना चाहिए, तो ये सारी डिटेल्स आपको manifest.json में मिलती है। तो ये एंगुलर आपको बाय डिफॉल्ट सारी चीजें बना कर दे देता है। तो ये आपका एक PW वाला कोड प्रॉपर्ली रन हो जाता है। ठीक है, तो मतलब आपकी एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से आपकी एप्लीकेशन है PW भी बन गई। सो यही वाला कोड मैंने आपको बताया था। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई दिस मैनिफेस्ट फाइल कंटेन्स की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो मैनिफेस्ट फाइल की वैल्यू पेयर इसीलिए कंटेंट उसका ये रहता है क्योंकि इस फाइल का पूरा एक्सटेंशन नाम ही ये रहता है manifest.json, एंड JSON इज की वैल्यू पेयर ही फॉर्मेट होता है JSON लिखने का। ठीक है, okay, great. So this is how we converted our application into a PWA. तो एक बार क्विकली अपन अगर रिकैप करेंगे तो अपन ने नया एप्लीकेशन बनाना सीखा, उसके अंदर HTML कहाँ लिखा होता है, CSS कहाँ लिखा होता है, ये अपन ने देखा। उसको रन कैसे करते हैं ng serve कमांड से, वो देखा अपन ने। अभी अपन लोकल पे ही, अपने लोकल मशीन पे ही है। फिर अपन उसको PWA में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या PWA वाली फंक्शनलिटी उसको कैसे दे सकते हैं, ये देखा अपन ने। ठीक है, एंड वी लर्न दैट एज वेल। तो वो चीज अपन ने सीख ली और अपना PW रेडी है। नाउ द sort of the best part, or what do we say, the final thing is कि अपनी एप्लीकेशन को अपने को डिप्लॉय करना है, अपने को सर्वर पे डालना है, वो भी तो जरूरत रहेगी ना। मतलब we'll कोड अपन HTML सारा कुछ लिखेंगे, but we'll be needing to deploy that particular application to the server, right? So how to deploy your application once you are done with your coding and everything, आपने HTML जो लिखना था सारी चीजें लिख दी, PW वाली कमांड से आपने उसको कन्वर्ट कर दिया ताकि वो एक एप्लीकेशन भी बन जाएगा। ठीक है, सो व्हाट, हाउ कैन यू डिप्लॉय? सो डिप्लॉय करने के लिए भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। देयर इज अ कमांड व्हिच इज ng build। ठीक है, तो आपको ng build कमांड चलानी रहेगी। ng build कमांड जैसे ही आप चलाओगे तो एंगुलर क्या करेगा, अगेन बिकॉज एंगुलर इज वेरी स्मार्ट, आपके HTML CSS सारी फाइल्स को उठाएगा वो और एक पर्टिकुलर फोल्डर में ले जाके रख देगा। उस फोल्डर को फिर आप सर्वर पे अपलोड कर सकते हो ताकि वो एज अ वेबसाइट सब जगह चलने लग जाए। ठीक है, व्हाइल डूइंग दिस प्रोसेस आपके सारे HTML CSS को उठाकर जो एक फोल्डर में रखने का काम करता है वो, उसी के साथ साथ एंगुलर एक और काम करता है, जो जो अनयूज्ड चीजें हैं उनको हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी CSS लिख के रखी है जो कुछ काम की नहीं है, what Angular will do is Angular will remove that CSS part. If you have used different images which are not being used in your website but they are kept in your assets folder, Angular will remove all of those dummy assets and everything and just keep the code which is required. So again, it will reduce the size of your website. Okay, so what we will do is we'll try to run this command
in the dummy application which we just built, ng build. Okay, so so this is our terminal. I'll clear it so that it's visible to everyone. So what was the command? Ng build. Okay, and I'll just press enter. ठीक है, so अगर आप यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर में भी देखोगे लेफ्ट साइड में, मैंने अभी कमांड चलाई नहीं है, अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पर अभी पोर्टफोलियो फोल्डर के अंदर there is E2E which is not you don't need to see it. There is node modules, again you can ignore it. There is source के अपन source फोल्डर के अंदर अपन सारा अपना काम कर रहे हैं, जो भी कोड लिख रहे थे अपन सारा src फोल्डर के अंदर लिख रहे हैं. ठीक है, now I'll press enter on ng build command. तो ng build command के बारे में मैंने जैसे बताया था कि वो एक फोल्डर में अपना कोड रखता है और unused कोड को हटा देता है. ठीक है, तो अभी ng build command रन होगी and just keep an eye on the लेफ्ट साइड बार एज वेल, जहाँ पे अपना फोल्डर का स्ट्रक्चर दिख रहा है. तो एक बार जब ng build कमांड पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ एक नया फोल्डर मिलेगा अपने को. दैट पर्टिकुलर फोल्डर वुड बी आर आउटपुट. अपन उसको एज अ फोल्डर कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं. देखो ये जैसे ही रन हुआ, कंप्लीट होने वाला है, यहाँ पे आपको एक डिस्ट फोल्डर मिल गया. ठीक है, तो डिस्ट का बेसिकली फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन. तो एंगुलर एक अपने को फोल्डर बना के देता है विच यू कैन यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो यूजर्स के अंदर एज एन एप्लीकेशन और एज अ वेबसाइट. सो हाउ टू अपलोड इट ऑन दी सर्वर, दैट इज अ टॉपिक फॉर सम अदर डे. उसको कैसे अपलोड कर सकते हैं, पर फोल्डर मिल जाता है जो कि अपनी वेबसाइट रहती है, कंप्लीट वेबसाइट. ठीक है, तो ng build से आपका ये कमांड पूरी, ये बिल्ड हो गया पूरा, और उसने अपने को कुछ डिटेल्स दिए जैसे कि इतनी देर में बिल्ड हुआ. अल्टीमेटली अपना 4.5 MB का वेबसाइट बना है, 3.5 MB इनिशियली था, रेंडर हुआ, ये वाली सारी चीजें अपने को देता है. एक एक फाइल का साइज बता देता है, थोड़ी डिटेल्स रखी रहती है उसके अंदर. अपना ये बेसिकली एक कमांड से अपना डिस्ट्रीब्यूशन वाला फोल्डर रेडी हो जाता है, इसको अपन वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट डिप्लॉयमेंट, ऐसे डिप्लॉयमेंट सिंगल कमांड से. तो अभी तक आपने देखा होगा कि एवरी थिंग हैज जस्ट वन सिंगल कमांड और अपनी एप्लीकेशन उसमें रन हो जाती है. HTML बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पता है, अगर HTML के साथ आप HTML के ऊपर ये एंगुलर का फ्रेमवर्क यूज कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट n टाइम्स फास्टर हो जाएगी, 5, 10, 100 टाइम्स फास्टर हो जाएगी, और आपको फंक्शनलिटी भी बहुत सारी मिल जाएगी. एंड द बेस्ट फंक्शनलिटी इज कि आपको PWA मिल जाएगा, जो कि आप एज अ मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज कर सकोगे आपके फोन के अंदर. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. एक ओवरव्यू देना था एंगुलर का, which I hope I was able to give. If you guys have any questions, you can ask in the comment section. I'll try to answer them. If till then, so जिसके पास भी questions हो आप लोग quickly अपने questions पूछ लो. उसके बाद अपन एक क्विज खेलेंगे जो कि which is based on the PPT which I just presented to you. It would be very sort of बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को उसको इसके अंदर. ठीक है, तो there's a question. नहीं ऐसे ही बोल लो. There's a question from Yamini Vyas, which is why is this manifest file contains key value pair? I guess I guess Yamini, I already answered your question. कि manifest file का जो format होता है वो नाम ही होता है manifest.json. ठीक है, in JSON is by default key value pairs में ही उसका syntax होता है. For example, अगर आप HTML फाइल दे रहे हो तो HTML में आपको body tag और ये सब यूज करना पड़ेगा, तो ऐसे ही JSON में वो key value pairs यूज करते हैं. Yeah. Again, there is a question that is there anything also available for creating forms? Yes, Gomesh. तो Angular के अंदर जैसे आप HTML के अंदर यूज करते थे ना forms वाला tag, similarly, so there is no difference in syntax of HTML. HTML आप जैसा लिखते थे normal HTML वेबसाइट में, वैसा ही आप Angular में भी लिख सकते हो by default. उसमें कुछ नहीं, बस वो extra functionality आपको मिल जाएगी Angular की जो HTML नहीं दे पाता. There's a question from Sashank, which is how can we create responsive layout?
So Sashank, I would like to tell you that Angular by default manages the responsiveness of a website. अगर आप किसी particular application चला रहे हो, for example अगर मैं अपन example लेते हैं जब अपन ने dummy website एक create करी थी ना, अपन उसी का example लेते हैं, ठीक है? You guys can carry on with the questions. I'm giving a demo of the responsiveness कि अपनी website responsive बनानी थी. तो ये वाली वेबसाइट थी जो अपन ने बनाई थी एंगुलर से, ठीक है. नाउ व्हाट आई विल डू इज, इसको अगर मैं ऑटोमेटिकली देखूंगा फोन मोबाइल व्यू में, तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, ठीक है. सो जस्ट हैव अ लुक, ठीक है. मोबाइल के लिए भी ऑटोमेटिकली वो काम कर रही है. तो एंगुलर ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ द ऑल दिस रिस्पॉन्सिवनेस एंड एवरीथिंग. ऑटोमेटिकली वो टेक केयर करता है उस चीज का. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. ओके, या again after this, Angular is better than React. There's a question from Lakshmi Narayan that Angular is better than React or not. So Lakshmi Narayan, I would like to say that React is just a library. React आपको सिर्फ एक library provide करता है जिसकी help से you can create modular code. मतलब आपका code modular हो जाता है React library use करने से, ठीक है. But React is just a library and Angular is a framework. तो React अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका कोड मॉड्यूलर हो जाएगा, पर उसको सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आपको कोई सी दूसरी चीज यूज करनी पड़ेगी. आपको रिएक्ट इंडिविजुअल काम में नहीं आ सकता. वेयरएज इफ यू आर यूजिंग एंगुलर, आपको बाय डिफॉल्ट ये सारी फंक्शनलिटी मिल रही है. आप सर्वर साइड लैंग्वेज आपको कोई सी दूसरी नहीं यूज करनी पड़ रही है. एंगुलर की हेल्प से आप सारा कुछ कर सकते हो. तो सेम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं एंगुलर और रिएक्ट, बट एंगुलर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज भी प्रोवाइड करता है. PWA फॉर दैट सेक, PWA मिल जाता है अपने को एंगुलर में, ठीक है. तो ये बेटर चीज हो जाती है अपने पास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट Vue.js is similar to Node.js. No, so Vue.js is similar to Angular, React and Vue. So you can compare all these three platforms. Again, Vue.js is a front-end framework, ठीक है. उससे आप modular code बना सकते हो. तो Vue.js is similar to React and Angular. मतलब generally you have to choose from all these three. तो Vue.js is again एक sort of front-end framework है जिसके थोड़े से अलग concept होते हैं. And Node.js is a client-side framework जिसकी help से you do the processing वाला part जो मैंने explain किया था आपको पहले वाली चीज करनी होती है. Again, there's a question. What is the best way to learn the Angular? Is that an inbuilt application or we have to install it from somewhere else? Okay, so Kunal, as I said that initially if you want to start working in Angular, I gave you 3 steps. सबसे पहले Node.js install करना होता है, उसके बाद npm package manager, उसके बाद Angular CLI install करना होता है, and then you are good to go. You can start working in Angular application, ठीक है. For running an Angular application, मतलब अगर मैं फोन में अगर मेरे एंगुलर एप्लीकेशन चला रहा हूँ तो मुझे कुछ प्रीवियसली नहीं चाहिए. मेरे इसमें डायरेक्टली एक वेबसाइट जैसी ओपन होगा. बिल्डिंग for writing code in Angular, you need those 3 steps which I mentioned in PPT. I'll also share the PPT so you guys can go through it again, ठीक है. There's a question from Manoj that which DB is used as a backend service. You can use any DB as backend service. You can use Firebase, you can use SQL, Mongo, NoSQL, whatever you want to use, you can use that. DB is not a problem which DB you want to use. Okay. Again, please explain components, modules, and services in Angular. Okay, so Shiv Kumar, components, modules, and services in Angular are a bit time-taking topics. If we can sort of schedule another webinar for Angular, next steps for Angular or anything like that, I would be happy to take those things, or you can ping me personally on my Facebook or LinkedIn. I'll share you the details of the things from where you can learn these things. Okay, yeah. So guys, you can keep on asking questions, right? Keep on asking questions. Till then, what I'll do is I'll prepare the quiz for you guys. It will take 3 minutes, 2 to 3 minutes, and then we'll start with the quiz. Because I guess we have almost completed its overtime. So I'll quickly prepare the quiz, and then we will start with the quiz. Till then, if you have any questions, just write in the comment section.
I hope it's fine from the college side if we can just take next 10 minutes, because I guess we were supposed to end at 12:30. So if we'll end at somewhere around 1, will it be fine for everyone? Okay, you take your time, you can prepare your quiz, and thank you for sharing such valuable knowledge. You take your around 10 minutes, then we will share your quiz. And the question answer session that you have done, that will be very helpful for the participants, and they are still questioning in the chat section. Yeah, you will continue. You will continue with that questions. You will continue. You take your time, and in that time, I like to speak some words. I would like to say thanks to our head of department for supporting us. Thanks to our chief guest, Professor Anil Gupta sir, and our speaker, Mr. Mrinal Jain, for cooperation and to be with us when we were not able to proper communicate due to technical problem. And thanks to the participants for being part of the webinar and for understanding the situation of our end. You can keep questioning in the chat section. And I'm also sharing the feedback link in the chat window, so participants can fill the feedback form, and the participants who will fill the feedback form will be eligible for the e-certificate. We will keep sharing the feedback form in the link for half an hour on the same platform, and you will get the e-certificate of the webinar within the 7 days. I'm sharing the feedback link. Okay, so until the quiz is loading, I'll take few more questions. So this was done. Difference between components and derivatives. This is from Vivek. So this is a really nice question. Components in Angular are something, as I mentioned, that you can divide your application in different components in Angular, right? So for example, header can be a component, footer can be a component. Let's take an example of a normal website which like a Facebook. Okay, Facebook को अगर अपने को components में divide करना है, if I'm making UI of Facebook, तो एक header मेरा component हो जाएगा, cover section मेरा एक component हो जाएगा, फिर लेफ्ट साइड बार जहाँ पे बेसिक डिटेल्स होते हैं यूजर्स के, फॉलोअर्स, फेसबुक लाइक्स एंड ट्विटर एंड ऑल दोस वेयर इज वर्किंग, वो डिटेल सेक्शन अपना एक कंपोनेंट हो जाएगा. ठीक है, देखिए चैट सेक्शन एक मेरा कंपोनेंट हो गया. ठीक है, इन सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर मैं एक पर्टिकुलर मॉड्यूल बना लूंगा जो कि मेरा प्रोफाइल मॉड्यूल होगा. करेक्ट. सो कंपोनेंट्स आर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स which can be used at different places. Header मैंने कहीं और यूज कर लिया, header component, footer component कहीं और यूज कर लिया, chat वाला component कहीं और यूज कर लिया. ठीक है. Now I'll come to derivatives. Derivatives is much more smaller entity, right? Very smaller entity. For example, you can make a small derivative for username. ठीक है, username आपकी वेबसाइट पे जहां पे भी आ रहा है, अगेन फेसबुक का अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो यूजर नेम जहां पे भी विजिबल हो रहा है, मैं उसको अगर नॉर्मल HTML वेबसाइट में बना रहा हूँ तो मैं कौन से टैग में यूज करूंगा उसको. मेरे को अगर कहीं पे यूजर नेम देना है फेसबुक पे, कहीं पे भी मेरा नाम जो बेसिकली मैं लिखता हूँ H1 टैग या H2 टैग में यूज करते हैं. करेक्ट, H1 H2 H3 टैग में यूज करते हैं. पर डेरिवेटिव्स क्या अपने को प्रोवाइड करते हैं एंगुलर में, दैट वी कैन क्रिएट आवर ऑन HTML टैग. Our own HTML tag we can create with the help of Angular. ठीक है, अगर H1 लिखा हुआ है तो मुझे क्लियरिटी नहीं होगी जब कोड पढ़ने जाऊंगा मैं कि अच्छा H1 लिखा है तो यहाँ पे यूजर नेम होगा, H3 लिखा है तो यहाँ पे सब टाइटल है, क्या होने वाला है. ठीक है, मेरे को पता नहीं चलेगा. पर अगर जस्ट इमेजिन कि अगर वो जो H1 ओपनिंग टैग और H1 क्लोजिंग टैग है उसकी जगह पे मैं बाय डिफॉल्ट वो चीज लिख सकूं जो उसके अंदर कंटेंट आने वाला है. फॉर एग्जांपल अगर सिटी का नाम आने वाला है तो मेरा कोड H2 नहीं रहे, मेरा कोड रहे सिटी और सिटी क्लोजिंग ब्रैकेट. मैं अगर एग्जांपल तुमको शेयर करके बताता हूँ स्क्रीन पे. ओके, is my screen visible, right? So I'll create a new file.
तो नॉर्मल अगर मुझे कुछ चीज लिखनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मेरा यूजर नेम लिखना होता है HTML में, तो हाउ आई विल बी राइटिंग इज लाइक दिस, राइट, H1, ठीक है, ये वाली चीज है। पर एंगुलर में अपने पास क्या ऑप्शन रहता है कि रेदर देन यूजिंग दिस HTML H1 tag, what I can do is I can, instead of using this HTML, I can use, ऐसे यूज कर सकते हैं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इससे क्या होता है, कोड रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। मतलब पता है कोई मेरे जगह कोई दूसरा प्रोग्रामर भी अगर काम करने आ रहा है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो ही नोज दैट हाँ यहाँ पे यूजर नेम आने वाला है। अगर यूजर नेम के नीचे मेरे वेबसाइट पे कहीं पे है कि यूजर नेम के बाद उसकी सिटी आने वाली है, तो आई कैन जस्ट यूज दिस लाइक दिस, ठीक है, तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। पर अगर ये नॉर्मल HTML होता तो फिर मेरे को यहाँ पे से स्पैन टैग या कुछ यूज करना पड़ता, या पैराग्राफ टैग यूज करना पड़ता, फिर उसके अंदर मुझे सिटी लिखनी पड़ती, ठीक है। तो ये जो खुद के टैग्स बनाने को मिल जाते हैं एंगुलर के अंदर, दीज आर नोन एज डेरिवेटिव्स। खुद के डेरिवेटिव्स अपन लोग बना सकते हैं। ओके, सो या दैट इज डन। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आई कैन टेक, अदरवाइज वी कैन move to the quiz. Okay, there are few more questions. What is the best website for learning more about Node.js? So for Node.js, you can directly visit Code School. There's a website which is Code School. You can visit that website, and there would be free learning materials for Node.js over there. Also, you can get in touch with me. I have a lot of video tutorials which I have downloaded from paid websites, so I'll share those with you if you need it. Okay, great. Yes. There's no feedback. Instead of HTML and CSS, we use Bootstrap from Manoj. Great, Manoj. So as you have to, again, for using Bootstrap, you have to include that thing in your particular website. ठीक है, Bootstrap का URL include करना पड़ता है. But when it comes to Angular material automatically अपने को ये सारी functionality दे देता है. ठीक है. There's a question that, sir, please tell about front-end developer as a career is a good for future. So there's a question from someone that is front-end developer a good career option. So all I can say is I'm also a front-end developer, and I don't see any problem in my future that why I chose front-end development as a career. So I guess you can also, if you are good at it, if you really like doing it, then definitely you can go ahead, try doing it. And there are n number of opportunities which are available. There is an opportunity for React developer, Angular developer, Vue.js developer, Node.js developer, HTML, CSS developer, JavaScript developer. There are so many opportunities available. So you can just go ahead and start working on that. Next question, can we use Bootstrap in Angular? Yes. Rashi, you can use Bootstrap in Angular. Angular by default provides you material UI. But if you don't want to use that particular material UI, you can use the Angular as well. Okay, yeah, so I hope I was able to answer your question as well. You just need to include Bootstrap just like you include it in your HTML website, and that's all. You can do that. Okay, yeah, so I am done with all the questions. I'll quickly open the Kahoot and again share the URL. So then if you have any questions, you can share. One more question from Payal. Okay. What is the latest version of Angular? So Payal, latest version of Angular is, as of now, it's Angular 10, I guess. 10 is in beta mode. 9 must be. So X, when I mentioned X, it was a variable. That in PPT when I used Angular X, it was the. I meant that Angular X is like
next year it would be Angular 11. After that it would be Angular 12. That's what I meant. Okay. Cool. For playing quiz, what you guys need to do is either if you are on your laptops, so what you need to do is in other tab you need to open Kahoot, KAHOOT.IT. I'll mention it in comment section. Everyone. So you need to open this website kahoot.it in your other tab. Either open it on phone, या तो phone पर open कर लो kahoot.it या दूसरे tab में open कर लो. Why? Because questions would be available on screen, which you guys are seeing, and answers you will have to give on your phone or the other tab which you are using. Okay. Now, once you are there, kahoot.it पे जब सब लोग चले जाओगे, so you will get an option to enter pin. ठीक है? तो सब लोग उस screen तक जब चले जाओगे, just go over there and I'll give you a pin within a minute. So once everyone is there, just mention it on the chat so that we can start the game. Okay, so is everyone ready for the pin? Okay, so I'll be giving you the pin right away. Just a second. Okay, so pin might be visible on your screens now. Okay, so you just enter the pin and you can join the quiz. Join it quickly, guys. So I can see 93 participants on the chat and 55 on the Kahoot quiz. So I guess we have some more. If anyone is facing any problem, just let me know. Okay. So questions would be visible on screen. Answer you have to give it in your phones.
Mr. Mrinal, are you able to hear me? There are some students who are not able to join. Can they join right now, the quiz? Yes, they can join. Visit kahoot.it and Okay. enter the. I'm mentioning it in the comment section. Okay. In the comment section, I am seeing that messages. That's fine. Okay.
Last two questions. Okay, so how did you like the quiz, guys? Was it easy? Was it difficult? Or how was it? You don't need to play it again. It might have started again on your screen, but that's how it is. So yeah, I'll quickly go to the slide again and end my presentation. We are well above the time limit, so I won't be taking any further time of yours now. If you have any quick feedbacks in
for me, you can give them in the comment section, or else, yeah. So I guess I had a slide where I had mentioned few details if you guys wanted to contact me. So I'll just share that slide. In questions, if you have any questions, easy, fun, easy. Okay, okay, cool. So I guess that's all from my side, ma'am. If you have anything to share uh, for the end, you can. You are, sir, you are sharing your one of the slide, na? Detail that you are telling. Are you sharing any slide, Mr. Mrinal? I think sir completed from his side. Okay, sir. Now, moving ahead, now I would like to call Professor Bhupendra Mandoi, sir, for giving vote of thanks. Sir, Thank you, ma'am. Good afternoon to all of you. On behalf of School of Computer, IPS Academy Indore, I, Bhupendra Singh Mandloi, Assistant Professor, want to thank our today's guest, Professor Anil Gupta, sir, for sharing his valuable time with us. Now I want to thank our speaker, Mr. Mrinal Jain, for conducting such a nice session on Angular JS, which is a industry demanded technology. And lastly, big thanks to my dear students for patiently attend this webinar. I think it is very helpful for all of you. Thank you. Thank you, Mrinal sir. Thank you, Anil Gupta sir. Thank you, Nikita ma'am. Thank you, dear students. Thank you, SOC IPSA IPS Academy. thank you, sir, and thanks to everyone for cooperation in such situation which we all have faced. Now, we are ending the session. Be happy, be safe, be healthy in COVID-19 pandemic timeline and stay learning. Thank you. Now, you can leave the meeting.